Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 2.2, question number 13. Question number 12 you can do. Now question number 13. See the question in your book. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? See the solution of this question. 13. Question number 13. Let the number be x. According to question, when this number is multiplied by 2 and adding 2 by 3, in this we will get minus 7 by 12. It means x into 5 by 2 in bracket plus 2 by 3 equal to minus 7 by 12. Implies that this into this 5x by 2 equal to minus 7 by 12 plus 2 by 3, we will transpose it and it will be minus 2 by 3. Now by taking the LCM we can solve it and it will be minus 15 by 12. Now we will transpose 5 by 2 in right hand side. We can write it x equal to minus 15 by 12 इंटू 2 by 5, क्योंकि इधर 2 डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई और इधर 5 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड. नाउ x इक्वल टू minus 1 by 2. इट इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. सी द क्वेश्चन नंबर 14 इन योर बुक. व्हाट इज द क्वेश्चन? Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of this denomination does she have? यानी 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के कितने कितने नोट्स हैं उसके पास, जबकि इन नोट्स का जो रेशियो है दैट इज गिवन 2:3:5. तो फर्स्ट वी हैव टू लेट हियर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. गिवन दैट रेशियो ऑफ number of notes equal to 2:3:5, let the number of notes of rupees 100 equal to 2x and the number of notes of rupees 50 equal to 3x and the number of notes of rupees 10 equal to 5x. Now we have to find the values of notes, यानी value of 2x notes of rupees 100. It means अगर 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हों, जैसे 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हों तो उसकी वैल्यू होती है 200. 100 रुपीज़ के 3 नोट्स हों तो 300. ऐसे ही अगर 2x नोट्स हैं 100 रुपीज़ के तो उनकी टोटल वैल्यू क्या होगी, दिस इंटू दिस, यानी 2x इंटू 100 दैट विल बी 200x. सिमिलरली वैल्यू ऑफ 3x नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 इक्वल टू 3x इंटू 50 दैट विल बी 150x. सिमिलरली वैल्यू ऑफ 5x notes of rupees 10 equal to 5x into 10 equal to 50x. Now total money equal to 200x plus 150x plus 50x equal to 400x. According to question this total value is given equal to 4 lakh. यानी 400x equal to 4 lakh implies that by solving it we can find x equal to 1000. Hence the number of notes of rupees 100 equal to 2x, that is 2 into 1000 because the value of x is 1000, so 2 into 1000 equal to 2000. Similarly the number of notes of rupees 50 equal to 3x equal to 3 into 1000 equal to 3000. The number of notes of rupees 100 equal to 5x equal to 5 into 1000 equal to 5000. It is your answer. Now question number 15. See the question number 15 in your book. What is question number 15? I have a total of 300 rupees 300 in coins of denominations of rupee 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160, यानी total number of coins is 160.
यानी इन तीनों ही डिनोमिनेशंस का मिला करके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट इन दिस क्वेश्चन लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 be x. Therefore the number of coins of ₹2 equal to 3x, because the number of coins of ₹2 is 3 times the number of coins of ₹5. It means it will be 3x. Therefore the number of coins of ₹1 equal to 160 minus x plus 3x. ये कहाँ से आया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 हैं और इन दोनों का मिला करके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बना हमारे पास x प्लस 3x, दैट इज 4x। तो जो रिमेनिंग बच गया वो ₹1 के नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। इट मीन्स इट विल बी 160 माइनस 4x। नाउ वैल्यू ऑफ x कॉइन्स ऑफ ₹5 इक्वल टू 5x, वैल्यू ऑफ 3x कॉइन्स ऑफ ₹2 इक्वल टू 3x इंटू 2 इक्वल टू 6x, value of 160 minus 4x coins of ₹1 equal to this into 1 equal to 160 minus 4x. Total money equal to this plus this plus this. It will be 7x plus 160. According to question, 7x plus 160 equal to 300. By solving this equation, we can find the value of x equal to 20. Now by putting the value of x here, we can find the number of coins of ₹5, that will be equal to 20. The number of coins of ₹2 equal to 3 into x, that is 20. 3 into 20 equal to 60. Now the number of coins of ₹1 equal to 160 minus 4 into 20 equal to 80. It is your answer. Now question number 16 and last question of this exercise. See the question. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. यानी ये गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 हैं और उसमें से जो विनर्स हैं उनकी संख्या कितनी है लेट करना पड़ेगा हमें। तो लेट the number of winners be x. Therefore the number of non-winners equal to 63 minus x, because total participants is 63. Money given to x winners equal to 100x. 100 into x, that will be 100x. क्यों? 1 पर्सन को 100 रुपीज़ का प्राइज अगर मिलता है विनर्स को, तो देर आर x विनर्स, देयरफॉर टोटल मनी इक्वल टू 100x. सिमिलरली मनी गिवन टू नॉन विनर्स, क्योंकि ईच विनर को 25 रुपीज़ मिलते हैं तो 63 माइनस एक्स विनर्स को टोटल 63 माइनस एक्स इंटू 25 रुपीज़ मिलेंगे। तो टोटल मनी इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंड बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड 75x प्लस 1575. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3000, एंड बाई सॉल्विंग this equation we can find the value of x, that is 19. Hence number of winners equal to 19. It is your answer, and you can do complete exercise in your fair register. Thank you and have a nice day.